Hi everyone, warm welcome to all of you. I hope you all are doing well. Today video is about Ielts. What is Ielts? What is significance and importance of its certificate? What is scope of it? What is its for assessment and their score? So let's begin. Ielts stands for International English Language Testing System. It is an internationally recognized English language proficiency test. 195 कंट्रीज़ हैं और उनमें हज़ारों की तादाद में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए कि वो तो उन तमाम हज़ारों लैंग्वेजेस को सीखे। तो ऐसे में एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हर एक ममालिक में बोली समझी जाती हो, और वो है इंग्लिश। इसी वजह से इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं भी आती, अगर आप इंग्लिश सीख लें तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाकर उनसे बातचीत कर सकें। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा मोड होता है जिसके ज़रिए हम अपनी बात जो है अगले बंदे को समझा पाते हैं, और ये तभी हम समझा पाएंगे जब अगला बंदा हमारी बात समझ सकेगा, हमारी ज़बान समझ सकेगा। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेशनली तौर पर रिकग्नाइज्ड है और इसको बहुत से ममालिक में बोला समझा जाता है। इसलिए ये कोर्स जो है ये आपको ये काबिलियत मुहैया करता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर सकें और उसको सीख सकें। It is significant because it assesses your ability to understand and use English in academic, professional, and immigration settings. Achieving a high score on the IELTS exam can open doors to educational opportunities, employment prospects, and migration to English-speaking countries. It is a valuable certification that demonstrates your English language skills to universities, employers, and immigration authorities. यानी अगर आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं तो ये गारंटी देता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आप उसमें लिख भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, उसको सुन के समझ भी सकते हैं, और आपकी जो स्पीकिंग फ्लुएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है। The scope of IELTS is quite broad. It is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, colleges, employers, immigration authorities, and professional bodies. For academic purposes, IELTS scores are commonly used for university admissions, scholarship applications, and academic program requirements. अगर आप जो हैं वो दूसरे ममालिक इस पर्पज़ से जाना चाहते हैं कि आप वहाँ जाकर तालीम हासिल कर सकें, तो फिर ये सर्टिफिकेट जो है उसका मकसद क्या होगा, उसके स्कोर्स आपको किस चीज़ में हेल्प करेंगे। वो आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में हेल्प करेगा, स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस के लिए हेल्प करेगा, और एकेडमिक प्रोग्राम की जो ज़रूरियात हैं उसके लिए आपको हेल्प करेगा। For professional purposes, IELTS scores can be used for employment opportunities, licensing, and professional registration. अगर आप जो हैं वो इस सर्टिफिकेट को हासिल करना चाहते हैं दूसरे ममालिक में जाकर जॉब्स करने के लिए, तो ये आपको जो है अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है कि आप वहाँ जाकर अपने आप को प्रोफेशनली तौर पर रजिस्टर करवा सकें और वहाँ पर जो है अपनी जॉब को हासिल कर सकें। क्योंकि अगर आपने वहाँ जाकर इंटरव्यू भी देना है या वहाँ पर बातचीत भी करनी है या वहाँ पर वर्क करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज पर पूरी कमांड हासिल हो, ताकि आप वहाँ पर जो वर्क है वो ईज़िली कर सकें। और ये कोर्स जब आप कर लेते हैं, ये सर्टिफिकेट जब आप हासिल कर लेते हैं, तो आप जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज पर पूरी कमांड हासिल कर चुके होते हैं। तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप कहीं बाहर के ममालिक में जाकर फॉरेनर से बातचीत कर सकें और वहाँ रह सकें। Additionally, IELTS scores are often required for immigration applications, such as those for skilled migration or study visas. The widespread acceptance and recognition of IELTS make it a valuable certification with a wide range of application. इसका जो टेस्ट फॉर्मेट होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है एकेडमिक और दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक मॉड्यूल उनके लिए होता है जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए या प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। उनको इसके लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए या फिर अपने प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जॉब वगैरह के लिए जो है वो इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जबकि जनरल ट्रेनिंग में जो है वो इमिग्रेशन आ जाती है और वर्क पर्पसेस आ जाते हैं। बोथ वर्जन असेसेस 4 लैंग्वेज स्किल्स: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इन चारों को हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे रीडिंग एंड राइटिंग में क्या होता है। रीडिंग एंड राइटिंग
In the academic version, the reading and writing sections focus on academic text and tasks such as analyzing graphs, charts, and diagrams. The general training version focuses on more everyday topics and tasks such as regarding advertisements and writing letters. Listening. The listening section is the same for both versions and assesses your ability to understand spoken English in various contexts. Speaking. The speaking section is also the same for both versions and assesses your ability to communicate effectively in spoken English. It's important to choose a version that aligns with your specific goals and needs. Make sure to familiarize yourself with the format and content of the version you will be taking to prepare effectively. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स तो इस बात को भी आप ख्याल में रखें कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये वेरी कर सकता है कि जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ का जो कोर्स है वो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स वो मांगते हैं, तो ये वेरी करती रहती है इन्फॉर्मेशन। तो आप जिस भी कंट्री में जाना चाह रहे हैं वहाँ की ज़रूर देखें कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसका जो स्कोर्स होते हैं बैंड स्कोर्स, अगर 9 बैंड स्कोर्स है तो इसका मतलब है कि आप एक्सपर्ट यूज़र हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं ये। उसके बाद जो 8 मैन है उसका मतलब है कि वेरी गुड यूज़र, मतलब कि आप एक्सपर्ट से थोड़ा सा नीचे वाला लेवल आ जाता है। उसके बाद बैंड 7 का मतलब है गुड यूज़र, यानी आप जो हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी जो है वो कमांड रखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। बैंड 6 competent user, band 5 modest user, band 4 limited user, band 3 means extremely limited user, band 2 intermittent user and band 1 non user, यानी वो तो फिर समझ लें कि 0 का इक्वल ही है। आई होप कि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके किसी काम भी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।